वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपको दिखाने वाला हूँ ये पोर्ट्रेट ड्राइंग, और बेसिकली ये ट्विंस बेबी का है। तो ये मेरी जो बेटी है विभूतिशा, उसी का ड्राइंग बनाया मैंने। तो आपको फर्स्ट पार्ट में दिखाया था इसका आउटलाइन कैसे बनाया जाता है विथ ग्रिड मेथड, एंड इस वीडियो पे आपको दिखाएंगे कि कैसे शेडिंग किया जाता है। तो चलिए चैनल पे एंड तक बने रहिए और सपोर्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइन ड्राइंग बना लिया, वो भी ग्रिड मेथड यूज़ करके। तो यहाँ पे देखिए मैं ब्रश स्ट्रोक का पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और ये 2B या 3B पेंसिल से आप इनिशियल जो ड्राइंग है, जो शेडिंग है, वो कर सकते हैं। तो देखिए मैं कैसे हेयर में ये पेंसिल से कर रहा हूँ। और हेयर के लिए आप 6B, 7B, 8B जहाँ पे जितना डेप्थ होता है उसके हिसाब से आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, हेयर पे कहीं पे जो हाइलाइट्स है पेपर वाइट छोड़ के रखे हैं, और जहाँ पे थोड़ा डार्क है वहाँ पे मैं 8B, 10B ये सब यूज़ किया। और आपको सबसे पहले ये देखना है कि स्किन टोन जो है उसमें एकदम स्टार्टिंग में लाइट जो पेंसिल होता है, जैसे कि HB या 2B ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिकली 2B, 3B ये सब यूज़ किया। तो देखिए जहाँ पे आइज़ के ऊपर थोड़ा सा डार्क एरिया है वहीं पे मैं 3B पेंसिल यूज़ किया, और आइज़ के जो लाइन है, आउटलाइन है और आईबॉल है, वहाँ पे मैं 4B, 5B ये सब यूज़ किया। तो गाइज़, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो रेफरेंस इमेज है उसी को देख के आप जहाँ पे थोड़ा सा टोन का वेरिएशन है उसी के हिसाब से आप पेंसिल का जो प्रेशर है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। जहाँ पे थोड़ा सा मिडिल टोन है, मतलब थोड़ा सा लाइट एरिया है, वहीं पे आप जो पेंसिल का प्रेशर है वो थोड़ा सा कम कर सकते हो। जहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ एरिया है, मीन्स डेप्थ मीन्स जहाँ पे थोड़ा सा डार्क है, तो वहीं पे आप थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा कर सकते हो। तो इसके हिसाब से क्या होगा, लाइट एंड शेड का जो प्रॉपर वेरिएशन है वो आपको मिल जाएगा। और आप थोड़ा स्मूथनेस के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग ब्रश जो है वो ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ किया, और टिश्यू पेपर भी यूज़ किया। टिश्यू पेपर से ज़्यादा आप रब कर सकते हो स्मूथनेस के लिए। और कहीं पे मैं नीटेड इरेजर भी यूज़ किया।
गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पोर्ट्रेट मैंने बनाया वो अप टू नेक तक बना के मैंने छोड़ दिया। और इसमें पीहू बोलने लगी कि उसकी भी पोर्ट्रेट बनाना है, तो इसलिए मैं फटाफट उसी को स्टार्ट किया। तो यहाँ पे भी मैं सेम प्रोसेस यूज़ किया, जहाँ पे थोड़ा सा डार्क है वहीं पे थोड़ा सा पेंसिल प्रेशर बढ़ा दिया। तो इसके बाद जब पीहू का पोर्ट्रेट होने लगा तो वो देख के थोड़ा सा खुश हो गई। हालांकि इसमें मैं कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और ये कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। सो दैट्स वाई मैं इसको जितना हो सके इतना यहाँ पे सेकेंड पार्ट में बना दिया एंड थर्ड पार्ट में इसका फिनिशिंग करके आपको दिखाऊंगा। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst. तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर दीजिए एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बाय, आपका दिन शुभ हो। Story ends, but I can feel it's tense. Don't know the consequence, the volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it?